तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह की एक टीन प्लेट चाहिए होगी। आप किसी भी टीन की चीज़ से निकाल सकते हैं इसको। तो उसके बाद आपको एक पीवीसी पाइप चाहिए होगी, इसका टुकड़ा काट लेना है। और एक आपको सोल्डरिंग आयरन 35 वोल्ट एलिमेंट चाहिए होगा। मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने वही ले लिया। आप नया ले सकते हैं, 20 रुपये का आता है मार्केट में। और उसके बाद आपको उस टीन प्लेट की वो वाली शेप दे देनी है। और देखिए मुझे लग भी चुकी थी, आपने देखा होगा अभी। और इसको कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप में फिक्स कर देना है। थोड़ा सा प्रेस करके फिक्स हो जाएगा। तो जल्दी से हमने फिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। और उसके बाद आपको अपनी सोल्डरिंग आयरन की बिट साफ़ कर लेनी है। आप 25 वोल्ट के सोल्डरिंग आयरन की बिट ले सकते हैं। ये भी आपको 20 रुपये की मिलेगी मार्केट में। मार्केट का ये होता है, आपको 10 में मिल सकती है, 20 में भी, और महंगी भी आ सकती है। और फिर उसके बाद इस एलिमेंट को कुछ इस तरह से इसमें डाल देना है। और फिर थोड़ा सा है बाहर को। और अब देखिए इस तरह से बस वायर्स ये होनी चाहिए इसकी कनेक्शन। जो जल्दी से हम इसमें वायर कनेक्ट करके इसको कनेक्ट करते हैं। Just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. Fall asleep when you're counting stars. Get it together.